Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. I hope all of you are doing well. This is me, Abdul Hasib. I have had a pleasure of managing the domain of social media marketing for the past year. Thank you so much, Pharmacozyme, for having me here and giving me such an incredible opportunity to host this event. Today, we are having Dr. Sajjad Ali, who is a clinical researcher from USA. Today, he will be enlightening us about the pathway to study abroad. Over to you, sir. Hello, everyone. Uh, Bismillah Rahman Rahim. My name is Sajjad Ali, and I'm a clinical researcher based in the US. And today I'm going to introduce a topic regarding the pathways to the global success. Actually, it's a guide to study abroad, basically in USA. So we will definitely navigate the scenarios and how to study abroad and well, what are the uh, steps which we need to go through. And I'm really glad to the Pharmacozyme team that they are conducting such a wonderful webinars for the students to uh, get familiar with all these kind of guidance. So, as Pharmacozyme team mentioned me that most of the students who join in this live sessions are coming from all over the background. So, I'm switching towards the Urdu. So, uh, जो पर्पस है इस वेबिनार का वो स्टूडेंट्स को बेसिकली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को जो हेल्थ साइंसेज से बिलोंग्स करते हैं or उनको guide करना regarding the studying in the US, regarding to do the masters, either masters or PhD, and to provide the practical advice, insights on admissions, process, scholarships, and academic success. And I hope you will gain the optimum amount of knowledge from this webinar. So in this webinar, हम जो हैं वो सबसे पहले ये देखेंगे कि what are the steps to pursue higher education in the US कि US में किस तरह जो है वो हम जो है वो हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं tips to secure funding and scholarship, how to grab those opportunities, how to take scholarships, funding, किस तरह प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है या किस तरह यूनिवर्सिटीज को रीच आउट करना है और दूसरे प्लेटफॉर्म जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आप कहाँ से वो अवेल कर सकते हैं and last but not the least, that is strategies. And the strategies, I think, and I still believe that strategies is the most important thing uh, to overcome the challenges जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं during the process. So without strategies, you can't get the optimum result, the best result, what you are seeking actually. So सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होता है कि why study in the US? Why not Europe? Why not any other country? But why specific study in the US? So the top reason that everyone you guys should choose US is just because the world class education. You know that US globally renowned एक country है for the you know hundreds of universities
जो है उसकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं इन हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स के हवाले से। सो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो रिसर्च होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको यूएस में ही मिलेंगी। सबसे ज़्यादा डाइवर्स आपको जो एनवायरनमेंट है, आइदर इन companies, either in institutions, either in hospital, सबसे ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी आपको जो है वो यूएस में मिलेगी। और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, so whenever we are looking for the future and future advancement, so everyone has just one focus regarding that what are the career prospects. So when we talk about the Europe and when we talk about the UK में saturation ज़्यादा हो चुकी है। सो इस वजह से यूके में जो है वो आपको इतना कैरियर प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा। Other than UK, apart from the UK, every country in the Europe has their own language. So आपको language barriers जो है वो उनका सामना करना पड़ेगा। सो यूएस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा लैंग्वेज पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो बचपन ही से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। सो वी आर यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश एंड आप इजीली लर्न भी कर लेते हैं। लेकिन यूएस यूएस में कैरियर जो प्रोस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, स्ट्रॉन्ग इन डिमांड है। मतलब अ, दुनिया में आज सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की की हुई है वो यूएस ने ही की हुई है। सो यूएस इज़ द ग्रेट फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे एजुकेशन जो है वो रिनॉन्ड है, वहाँ यहाँ पे डाइवर्स एनवायरनमेंट है। एंड among the top 100 universities according to the QS, and QS एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है वो रेकमेंड कर रहा होता है। सो ही reckon that among the 100 now this year almost 52 universities are actually from the US। सो इससे अंदाजा लगाएं कि यूएस की 52 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अमंग द टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटीज में शुमार होती हैं। एंड व्हाई यूएस इज गुड is also that it gives the international student, it gives you the opportunity to work after the graduation as well। सो जैसे हम ओपीटी कहते हैं यहाँ पे, एक टेक्निकल टर्म है, ऑप्शनल ट्रेनिंग। सो इसमें ये होता है कि आप जो है जैसे ही आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, सो आप अपने 1 साल या अगर आप स्टेम प्रोग्राम में हैं तो 3 साल तक आप यूएस में जॉब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फर्दर करें तो फिर आपको H1B यानी वर्क वीजा भी मिल सकता है। सो यूएस में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही हैं। सो नाउ द टॉप हेल्थ साइंसेस programs uh, which are basically based on the masters। सो मास्टर्स में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो यहाँ पे मार्केट के लिहाज से है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ है। And here in public health, specialization like epidemiology, biostatistics, global health, environment health, सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। एंड इनके जॉब रोल्स जो हैं वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, biostaticians, policy analysts, policy makers. So they are right now in demand। इनके इनिशियल पे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इनिशियल
थोड़ी सी लो होती है, जैसे कि 50,000 और 55,000 to 80,000 per year, but actually they are the public health office holders. So ग्रेजुअली जिस तरह हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, और इसी तरह यहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होती है विद पर्क्स एंड बेनिफिट्स एज वेल। दूसरी सबसे डिमांडिंग जिसका मैं मतलब मेरी खुद की बैकग्राउंड भी है, वो है मास्टर्स इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। सो सिंस AI uh, has evolved everything. So, in the medical sector, AI has digitalized each and every part of the healthcare setting. So, I believe that it has a good scope in terms of the job market as well. That and its specialization, data analytics, clinical decision support system, and health IT, and और आप क्लिनिकल हेल्थ डाटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं। सो इट्स अ broad horizon, and you could avail any kind of specialization, and from that specialization जो आपकी initial जो आपके roles होंगे, either you would go for the health data analyst, health informaticist, uh, IT specialist in the healthcare sector, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि AI evolve everywhere है, so health AI analyst positions भी आ चुकी हैं मार्केट में, and they are really doing well. So yeah, so इसके insights यही है कि increasingly adoption of AI and technology in healthcare sector and make the healthcare sector innovative. So this is a again a good program that if someone among you would like to go for it. And तीसरा जो थोड़ा सा I would say that थोड़ा सा अगर आपका मैथ्स या आपका उससे बैकग्राउंड नहीं है, स्टैट्स से, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट ये लॉन्ग वर्दी रिवॉर्डिंग एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसकी स्पेशलाइजेशन भी मेडिकल डिवाइसेस में होती है, ज़्यादातर इमेजिंग सिस्टम्स में भी होती हैं, जैसे कि आपने सिटी स्कैन्स या एमआरआई या हाउ टू predict the knee replacement. So these are the specializations which currently in demand in US, and इनके जॉब रोल्स जो इनिशियल होते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स या R&D स्पेशलिस्ट या clinical biological engineers, or either in the pharmaceutical sector, either they are going for the hospital sector. So इसकी भी जो है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है in terms of the job roles. And इनिशियल पे, जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके रिवॉर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको इनिशियल में मिलते हैं, जैसे कि अराउंड इसकी इनिशियल जो सैलरी होती है इन रोल्स की वो 65 टू 1,00,000, I mean 1 lakh per year होती है, and it's really high in demand because now we are moving towards the personalized medicine, so ये genetics से related भी होता है, so people who are more engaged in the genetical medicine, in genomic medicine, they should go for that uh, biomedical engineering or bioinformatics, so they could enhance their skills, their learning, their abilities in this program.
through this program. And of course, masters in pharmaceutical sciences. So this is the evergreen master's program. But right now, pharmacokinetics, drug development, and toxicology. Uh, these three are main, and pharmacoeconomics. Uh, it's also going very well in terms of payback, that the roles like research scientist and R&D. Either you go for the pharmacovigilance officers, either you would go for the uh, 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 research officer in the pharmaceutical, or you would have a chance to research officer or research analyst in the hospitals too. So इनकी initial पे जो है वो 55 to 85,000 के around होती है, which is pretty good in US market. And it's expanding opportunity होती है, मतलब drug discovery से लेकर regulatory compliance, फिर pharmacovigilance, and so basically if you are coming from the pharmaceutical background, so it covers whole spectrum of the pharmaceutical industry basically. Now, the most and the most in demanding program among all these is the Master's in Nursing or Healthcare Administration. I more prefer to the Master's in Nursing because इसकी highly demand है in terms of the outpatient nursing, inpatient nursing, uh, nursing analyst, healthcare administrator, consultant nursing. So, and they are high pay uh, job as well in from the start, like 70,000 to 120,000 per annum. And and believe me, this is one of the best pay scale in the job US job market per annum के हिसाब से. And because most of the time अब नर्सिंग होम भी है यहाँ पे, एंड डे केयर भी है, एंड तो आपको हॉस्पिटल्स, आपको नर्सिंग केयर, आपको साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल सेंटर्स में भी आपको यहाँ पे आराम से जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. सो so you have, if you choose this uh, program, then you would definitely have a better spectrum of job in terms of US market. So so now comes to the emerging trends in the healthcare sciences. So as I mentioned earlier about that कि जैसे जैसे हमारा मतलब कोविड के दौर में हमने सबसे ज्यादा बूस्ट देखा था टेलीमेडिसिन का, डिजिटल हेल्थ का. Now technologies are more progressive and more advancing towards the uh, even not even the urban areas, but the remote areas where doctors uh, resist to go there, or doctors don't usually want to go there. So through technology, now advancement of the healthcare, sorry, उर्दू में ही रहना, सो मुझे कहा गया. तो आपको जो जो आपको डेवलपमेंट या जो जो आपको देख रहे हैं वो आप टेक्नोलॉजीज के थ्रू देख रहे हैं. सो प्रिसीजन मेडिसिन, लाइक पर्सनलाइज्ड आपको ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो भी थ्रू टेक्नोलॉजीज के थ्रू मिल रहा है. सो हेल्थ साइंस, basically this is the most a right moment for you guys to come forward and
look over those new or emerging uh, fields of health sciences which could, जो आपको बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है. um, so यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी है कि व्हाट अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. So biotechnology masters in medical biotechnology is something related. Yes, it's great. Hanzala, uh, that's a good option for you as well. But you know, uh, ये जो फील्ड जो आपने बताई पूछी है, ये हर यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगी. सो जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा और या मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज में जो है वो आपको मिल जाएगी ये फील्ड. बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स इन बायोमेडिकल medical biotechnology, you need to search and search meticulously regarding that where would be would be a good fit. And yeah, it's a good option for you, definitely, if you are looking for that. So now come to the main topic of this webinar. This is the admission process overview. So the first and most important step of yours is the identify the programs that align with your goals. ओके, आपने बीएससी इन केमिस्ट्री कर लिया, आपने बीएससी इन बॉटनी या zoology या किसी में भी आपने जो है वो अपनी बैचलर्स डिग्री ले ली. बट नाउ आफ्टर द ग्रेजुएशन यू रियलाइज दैट कि दो मुझे इस स्टडी में मतलब कुछ चार्म नजर नहीं आ रहा, या मुझे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं कोई दूसरी फील्ड, या मैं इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं वो लेना चाहूँ. सो गो फॉर दैट फील्ड, बिकॉज यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करती हैं कि यू कैन स्विच योर फील्ड टू द मास्टर्स. सो आपको यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आराम से आपको लेवरेज ये देती हैं. यूरोप में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आपको नहीं होगी, लेकिन यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट diversified in terms of the education point of view, that they gives you leverage. Either you are not either you would go for your bachelor's program in the masters, or you would want to go for the another one. And so ये आपका जो प्रोग्राम होगा वो आपके कैरियर गोल्स के बिल्कुल मुताबिक होने चाहिए. क्योंकि आई बिलीव दैट ओके, अंडर ग्रेड्स में जब हम अंडर ग्रेड्स कर रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस ये होता है पाकिस्तान में मोस्टली कि हम डॉक्टर्स हो जाएं. हम डॉक्टर्स बने, नहीं बने तो चलो कोई दूसरी फील्ड में. लेकिन नाउ दिस इज द सेकंड चांस फॉर यू गाइस to explore the opportunities where you guys think that you would be the good fit, और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है. And how would you recognize your goals, or how would you recognize your ambitions, that मेरा किस तरफ झुकाव है. So talk to your seniors, uh, talk to your mentors. अगर कोई नहीं भी है mentors, तो talk to your professors. But talk, अनलेस के आप जो है वो डिसीजन ये गलत ले लें. बहुत से बच्चे ये कर रहे होते हैं कि वो पीएचडी के लिए या दूसरी फील्ड्स के लिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद उन्हें फिर वहाँ पे वो मतलब वो चार्म उन्हें नहीं मिलता, या they don't like their atmosphere, they don't like the study, they don't like their platform and something like this. So
फिर वहाँ से उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर उनका मास्टर जो है वो बिल्कुल ही निल होता है फॉर द कैरियर डेवलपमेंट। आई मीन फॉर दैट सो आपका कैरियर डेवलपमेंट, आपके कैरियर ग्रोथ, ये सब के सब जो हैं ये आपके कैरियर गोल्स पे और आपकी एम्बिशंस पे ये डिपेंड करते हैं कि आपका जो भी मास्टर्स प्रोग्राम होगा वो सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि उसकी बेसिस पे फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है। सो यूनिवर्सिटीज भी बहुत रैंकिंग में मैटर करती हैं। सम ऑफ देम सो दैट के यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करती, अभी भी यूनिवर्सिटीज मैटर करती हैं। आपको भी पता होगा कि कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज का हो, कोई जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटीज का हो, कोई आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का हो, दे stand out among from the anyone in the world. So why? And companies even बगैर इंटरव्यूज तक के उन्हें जो है वो अपॉइंट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज का नाम है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में देखें, सो लम्स हैं, आईबीए हैं, सो वहाँ पे कैरियर वीक होते हैं। सो वहाँ पे कैरियर वीक्स में कंपनीज आती हैं और पिक कर लेती हैं वहीं से ही स्टूडेंट्स को, and they just grab the students and they just do the normal or what you call the routine conversation with the candidate uh, in a normal way, and they just realize that okay, इसमें स्पार्क है, इसमें एक eagerness है बढ़ने की, इसमें लगन है, जद्दोजहद है। सो वी वुड गो फॉर दैट। सो यस, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम की डिटेल्स और एक्सपर्ट फैकल्टी एक्सपर्टीज या सेकेंडरी है। बट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की डिटेल्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरियर गोल जो है वो उससे अलाइन करता है या नहीं करता। मतलब आप जो बनना चाहते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है या नहीं। Here's eligibility criteria. So I will it's academic requirements is just for the information that GPA of 3 or higher. So I just want to mention about that it is not compulsory that you should only have a 3 GPA or more than 3 GPA to get even a scholarship in USA specifically. I'm talking about that. आप में टैलेंट है, आप में ईगरनेस है लर्न करने की, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आप आ, आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो शमूलियत हुई हुई है, या डिफरेंट इंटरनेशनल कम्युनिटीज में जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, then they will definitely consider you because they really put weight on the co-curricular activities, specifically those activities which actually build your soft skills as well. So अगर आप किसी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल एनहांस हो रही हैं, जैसे कम्युनिकेशन, योर क्रिटिकल थिंकिंग, your problem solving thinking, so it's really put weight on your admission documents on your admission portal. And GRE एंड GMAT भी स्कोर जो हैं वो मैटर्स करते हैं, बट ये मैटर तब करते हैं कि आप किसी ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें जो आईवी लीग आई मीन जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हों। फिर वो जो है वो इसी तरह स्क्रूटनाइज करती हैं स्टूडेंट्स को थ्रू GRE, थ्रू GMAT,
जिस तरह हमारे यहाँ MD कैट और उसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, यहाँ पे GRE और GMAT के होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे evaluate the student's performance and student credibility, actually, that how much the student is credible to get admission in the best universities. Now, the most important thing is a preparation of the application documents. So, three things are the most important things for your preparation in the application document. Statement of work, SOP. I mentioned earlier regarding that if you have a passion, if you have a eagerness, and if you believe that you could easily, I mean not easily, but you could do something that you can, and you have a passion to change something, you have a eagerness to learn, to grow, and to help humanity or humankind, then it should be shown through your SOP, because they are, they are seeking for those kind of candidates, actually, because nowadays uh, they know that everyone is, I mean, everyone gets CGPA, everyone gets the certifications through the others, but they know that your SOP actually is the reflection of your whole ideology which you have taken since your college. That either you are, motivated person, and if you are motivated, why you are motivated, and what's your goal and ambitions for your uh, future development. So it's really important thing. Then letter of recommendations. It's really important that you should consider letter of recommendations from your professors. If not, then if you are currently doing job and you are unable to get the letter of recommendations from professor, then you should consider the LOR from your uh, hiring manager, from managers, from directors. So it also gives you a more weightage uh, than the others, candidates. And resume. So resume writing and SOP writing, they are the most challenging writing, and you know that ATS system. And one more important thing, I just heard about that the ATS system also looking during the admission process. No, that's totally wrong. They never consider the ATS system when it comes for the university criteria, when it comes for the admission process. They meticulously look over all the details of all the students, because वो एक committee organize करते हैं for every department of the university, uh, around 20 to 25, जिसमें प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, एंड टीए टीचिंग असिस्टेंट होते हैं. They go through all the applications, and then they highlight those candidates who are impressive than the others. So ATS और वो जो हम मतलब आई मीन जो हम यूजुअली अभी यूज कर रहे हैं हम चैट जीपीटी को या एआई को, दे कैन इजीली डिटेक्ट दैट ये कि इट इज सिंथेटिक, इट इज नॉट नेचुरल SOP. So it's really important. Okay, if you are going for the SOPs or resume, it should be natural. It should be yours. You can take help. You can take guidance from the Chat GPT.
I'm not saying that you shouldn't go for the chat GPT at all, but you can't rely totally on chat GPT for the best result, because they know that now the chat GPT is norm. So think uh, twice before going into this process, because आपके जो है वो एक तो एफर्ट भी लग रही है, दूसरा आपकी मतलब आपके इस एप्लीकेशन प्रोसेस में सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी एप्लीकेशन जो फीस होती है वो नहीं होती, लेकिन कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी होती है, तो आपके डॉलर्स भी खर्च होंगे. सो मेक श्योर that you should keep all these things in mind. And submit the applications, apply through the centralized platforms. So US में centralized platforms होते हैं, जैसे कि SOFAs for public health programs के लिए होता है, फार्मेसी के लिए CHARS CPAHS होते हैं, और इसी के लिए दूसरे मतलब रिलेटेड के सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं. सो वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, SOPs LOR वहाँ सब अपलोड करने होते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर अबाउट दैट that you already done your evaluation from the west and from HEC, because in medical they want evaluation, especially for SOFAs. If you are looking for health informatics or public health or uh, pharmaceuticals master's program, then your evaluation should be done before your application process, so that you would not get any delayed response. And ensure all the documents and upload it before the deadline. So डेडलाइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, और डेडलाइन से स्टार्ट कब से होती हैं. सो स्टार्ट होती हैं सितंबर से यूएस में, सितंबर टू मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 15 और अप्रैल 28 तक. जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं यूएस की, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो मार्च में ही क्लोज होती स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी ऑक्युपाइड थ्रू दी बेस्ट कैंडिडेट्स. सो जितना जल्दी हो सके, आई मीन अपनी प्रिपरेशन जो है वो 12 months, आई मीन 1 year बिफोर जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेक्स्ट ईयर का रखा इरादा, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, और अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स और अभी से ही इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दें. यूनिवर्सिटीज़ के वेबिनार्स, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ के वेबिनार्स, उनके वेबिनार्स पे जाएं, उनके पेज पे जाएं, उनके वेबिनार्स पे जाएं, और उनके एडमिशन ऑफिसर से जो है वो आप बात कर सकते हैं. सो एट दिस टाइम यू आर नॉट रीचिंग आउट टू द प्रोफेसर. आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें जिस यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कि either it is good fit for you or not, because I think you should only avail 5 universities per time, because एक तो ये कॉस्टली होती हैं, एज आई मेंशन दैट कि आपको एप्लीकेशन जो है वो पे करनी होती है एप्लीकेशन फीस. दूसरा ये है कि आपके पास टाइम है, तो आप टॉप 5 प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आप अपनी सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट to go through all these steps before you come to the application process.
Now, scholarship and financial aid. So, types of scholarship and financial aid opportunities are universities based scholarships होती हैं. I already got that merit based scholarship. एक तो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, दूसरी होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप टू सपोर्ट स्टूडेंट. एंड द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती हैं वो एक्चुअली थ्रू द गवर्नमेंट होती हैं. आई मीन अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी को स्पॉन्सर करे और वो यूनिवर्सिटीज में भेजे कि हम इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, सो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो जाएगी, क्योंकि उसे फिर गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की है. गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यूएस की गवर्नमेंट है. जैसे फुल ब्राइट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम, आपने बहुत से स्टूडेंट आई मीन एलुमनाई देखे होंगे, जो सीनियर देखे होंगे जो फुल ब्राइट स्कॉलर्स होते हैं. दे गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द this platform. And the main important thing to avail uh, this scholarship is that you need to do GMAT and GRE before before or what you call to avail this Fulbright for student program. बिकॉज आपको GRE और GMAT में जो स्कोर होगा फिर वो एड ऑन होता है आपकी पूरी इवेलुएशन के लिए, एंड देन यू वुड बी कंसीडर्ड फॉर द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और नॉट. एंड ये यूएस की गवर्नमेंट देती है. एंड पिछले बार मतलब लास्ट टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 20 आई मीन 57 स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिली थी, विच इज अ ग्रेट नंबर. सो एंड दूसरी है हर्बर्ट हम्फ्रे फेलोशिप प्रोग्राम. सो ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है. Those are from the MBBS background, and those who coming from the BDS background. So उनको fellowship provide जो free में government करती है. Fellowships means they actually give you the opportunity to work as a house officer, or in terms of the paying house officer. सो ये हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट ही जो है वो से फंड करती है. तो थर्ड but not the least is the external scholarship for health sciences. And Gates Millennium Scholars is the most popular among the external scholarship, but it's really tough to get that because all over the world जो है ये scholarship provide करते हैं for the health sciences. And इंडिया से आपका कंपटीशन है, चाइना से आपका कंपटीशन है, और बांग्लादेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कंपटीशन है. सो इट्स रियली टफ, एंड दे हार्डली गिव अवे 500 scholarships per year, I believe. So it's really tough to take that scholarship. And American Public Health Associations भी अगर, that's why I talked about that, why it is good to have international organization member, and why you would consider that if you are a member of international institution, international organization, then you would be able to communicate with those who are already American Public Health Association member, or who are somehow helps you or guides you in terms of taking that Public Health Association scholarship. But it's totally up to them. If your previous work aligned with their goals and their projects, then they would consider you. So it's totally you know
dependable on your background, your experience. So everything counts. Now, Lucy has assistantship and fellowship. So, assistantship, just like a teaching assistant and research assistantship, PX also gives you stipends and tuition waivers. So, if you are looking for the master's program and still thinking that, okay, if I get the opportunity teaching assistant and research assistant, I should talk to my professors. Now, this is the moment you can avail that opportunity, that to ask the professors, to ask the teachers, to ask the you know coordinator regarding the opportunities in TRA. So you could be able to get the stipend in return, and also the tuition waive they gives you also in some percentage. I believe sometimes it depends on the university to universities again. Sometimes 20 to 25% आपको ट्यूशन वेव्स मिलता है, समटाइम्स 30 to 35% आपको ट्यूशन वेवर्स मिलते हैं, स्टाइपेंड अलग से मिलता है आपको. एंड फेलोशिप ऑफर्ड होती है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से. आई मीन if you have extensive background in the research, or either in the clinical research, either in pharmaceutical research, so they would consider you as a fellowship, and they give you the opportunity to come here in US and participate in research as a fellow member. So that's it. And now we move towards the how to maximize your chances. So strong application, as I mentioned earlier, कि अगर आपकी application strong होगी, then ही वो emphasize करेगी आपकी achievements को और आपके future goals को in front of the recruiters, or in front of the professors, or in front of the coordinators who are selecting you. सो SOPs अपनी जो है वो आपने बेहतरीन बनानी है, बेहतरीन आर्टिकुलेट करनी है. एंड they are, I mean, in US market, as I mentioned earlier, they are seeking for the soft skills. So if you uh, are a person who have a background in the leadership skills, and who already build a problem solver, thinker, and who thinks that he could be a good team player, then show to them through your SOPs, through your mm, let certifications, that you would then you are a good team player, supportive man, and you are a critical thinker as well, analytical thinker as well. So that's really matters. And again, most importantly, meet the deadline. If you want to avail the scholarship, I'm specifically about the scholarship. If you want to avail the scholarship, then you must consider that you have to apply as soon as possible. I mean, uh, during September they start their application process all over the US. So before the end of the December, your application should be done and dusted if you want a full scholarship. So, and God forbid if anything happens, तो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है या टाइम थोड़ा सा निकल गया, जैसे कि अभी जनवरी में जो अभी भी लोग देख रहे हैं, तो आपके पास जैसे कि मैंने कहा कि फरवरी तक टाइम है. स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो आपको मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, अवेल करें अपॉर्चुनिटीज. लेकिन वही कि अपना डिसीजन जो है वो चूज वाइजली, बिकॉज लाइफ never gives you the second chance after the graduation. I mean, after you've done the undergrad. So this is a second chance for you to evaluate yourself, to think more progressively regarding your future, your plans,
and what do you need. So unlock your potential in the US, and I just mentioned about that कि आपने अभी देखा ही होगा कि ट्रम्प ने जब से मतलब ओथ लिया है तो उसने 25 बिलियन डॉलर्स का जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसने ऐड ऑन कर दिए हैं इकोनॉमी में फॉर द टेक्नोलॉजी एंड फॉर द एआई एंड सऊदी ने भी यहाँ पे जो है वो 500 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं फॉर द टेक्नोलॉजी फॉर द रिसर्च पर्पस एंड डेवलपमेंट. सो यू नो स्कोप यहाँ बहुत है एंड इनोवेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है. Everyone knows about that each and every innovation comes from the US, so in the world. So if you want to make your life, if you want to change your life, then it's never be too late. I believe that at every stage of your life you can do wonders. So think uh, positively. Whatever happened in the past, in the past. अगर आप यही सोच के जो है बैठ जाएंगे कि पास्ट में ये हुआ है और मैं जो हूँ वो थोड़ा सा मतलब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. You don't know how much potential you have. Just believe in smart working. Just believe in hard working. That hard working with smart working, and then you should leave rest on Almighty, on Allah, and He will give you the results. But you need to unleash your full potential. जब तक पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाओगे, ओके जो हो गया. अगर पास्ट में बिलो एवरेज थे, हो गए. तो जीपीए कम है, ग्रेजुएट हो गए हो, जीपीए कम है, कोई बात नहीं. मूव ऑन. थिंक क्रिटिकली, think wisely, and go for your personal development, your professional development. And मैंने भी मतलब सेटबैक्स सबकी ज्यादा हो होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वन थिंग एक फोकस रखी थी कि नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप. So I had a chance to for the pharmaceutical एक company थी. So I just want to mention about that कि वो एक MNC pharmaceutical company थी. जब मैं कराची में था मेरी सबसे पहली जॉब थी और MNC में आपकी पहली जॉब होना इट्स रियली गुड लक फॉर यू. सो मैं भी बहुत खुश था. सो 2 महीने बाद ही उसने डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी उस एमएनसी कंपनी में ड्यू टू द पाकिस्तान के जो हालात वगैरह जो चल रहे होते. एंड फिर ये हुआ कि मुझे जो है वो मतलब अपनी सीट से मैं खुद निकल गया क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि कोई मेरी वजह से कोई और निकल रहा है. सो मैं डिसहार्टेडली जो है वो अपनी मैंने सीट छोड़ी और वो मतलब विद इन 2 months मुझे खुद छोड़ना पड़ा. सो मैंने खुद ही जो है वो अपना रिजाइन दिया उस पोजीशन से जो जिस एमएनसी के लिए मतलब मैं फार्मेसी के 4th ईयर से लगा हुआ था कोशिश में. लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी बाद में भी. और मुझे यही था कि मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, मेरा काम है सिर्फ आगे बढ़ना और बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है कि मुझे कब सिला मिले, मुझे कैसे सिला मिले. मुझे सिर्फ इतना भरोसा है कि मुझे जब भी सिला मिलेगा बेहतरीन मिलेगा. सो मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया उस वक्त. अपने आप को ये नहीं कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ या जो मेरे पास में हो गया हो गया हो गया.
नाउ मूव ऑन। सो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपकी बीजीपीए भी नहीं है, ट्रस्ट मी, फिर भी आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। लेकिन बिलीव होना चाहिए आपको, और आपके जो डायरेक्शन हो वो, आपकी डायरेक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्या मेरे एक मेंटोर से जॉन हॉपकिंस में आज से 4 साल पहले एक प्रोफेसर थे जॉन हॉपकिंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे बात हुई थी। से ही एक्चुअली एडवाइस मी के सैयद, अगर तुम्हें राइट डायरेक्शन मिल जाए ना, तो जिंदगी में वही सब तुम्हारा सबसे बड़ा हासिल होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को राइट डायरेक्शन ही नहीं मिलती। सो इफ यू आर uh, if you are feeling unsatisfied, or you feeling demotivated, don't feel sad, don't feel unsatisfied, because uh, the life is a full of journey. So ups and downs आते रहेंगे। डायरेक्शन अपनी मत भूलना, क्योंकि डायरेक्शन विल मेक्स यू। Uh, no one knows about the destiny, but if you choose the right direction, then it will definitely leads you toward the success by hook and by crook. So यही है सर इस पूरी स्लाइड में regarding the that US is why you should choose US, because go for the best, dream for the best, and choose for the best, because US is the best, and believe in yourself that you can avail, uh, and you can get the opportunity to be studied in the US, and even in scholarship, and even with the with the TA and research assistantship, and with the fee waivers, or there are hundreds of opportunities of scholarship, of funding through you could avail. But you need to focus on your goals, think wisely, and think twice before making any decision to go towards the any direction or any program. So जैसा कि मैंने कहा था, डाइवर्स पाथवे है आपका। मुझे सवाल बहुत से लोग कर रहे थे कि व्हाट अबाउट द फार्मडी, व्हाट अबाउट द फार्मेसी बैकग्राउंड, व्हाट अबाउट द those students who are actually coming from the BDS, who are coming from the pharmacy. So now the typical, I believe that typical जो हमारी डिग्रीज थी, जैसे कि BDS, MBPS और फार्म डी, नाउ दे आर इवॉल्विंग। ओके, हम आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, सो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं या जितने भी फार्म डी ग्रेजुएट्स हैं, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी अनदर, आई मीन दे आर मोर फोकस्ड ऑन दी IT side, management sides after the founding, to get the exposure of the IT sectors, because AI and IT is doing amazing job, and now in the coming future आप हर चीज, even in hospitals, in the pharmaceutical industry, everywhere you need to go for the IT or engineering related or maths or stats, because this is the now we are going towards a new era, an AI era, and I believe that you should focus on the next wave, and already wave is the AI wave. So if you are coming from the pharmacy background, just like me, I am a pharmacist and in Pakistan.
and then I moved towards the clinical research, and then I moved towards the health informatics. So it's a journey, but I believe in one thing, that keep striving, keep and it's, it keeps you giving motivated that you are doing something. So if you have a goal, if you have an objective regarding your career development, regarding your career advancement, then choose that option rather than stick with the traditional, you know, degrees like uh, farm day is a great, and you could easily avail that, but it's a long journey. You need to pass the pharmacy license exams, and then you need to uh, focus on the hospitals that which you are looking for. And in US particularly, there are 54 states, and every state has a different pharmacy license exams. So for that, you have to pass. If you want to go the Texas, you have to pass the Texas license exam. And if you don't get any opportunity in Texas and you are getting opportunity in Virginia, then you first need to pass the Virginia license exam. So it's better to evolve yourself. If you are coming towards coming towards the US, coming towards a new country, then mold yourself according to the requirement. I just want to say that. And biotechnology, the one Kensa Khan said that, what about the biotechnology, sir? Yeah, biotechnology is great. I just mentioned about the bioengineering and bioinformatics. It's all related to bioengineering. Now you can go for the bioinformatics. Biotechnology again is a typical degree which currently going on. Now you should take a step ahead among the others. So I believe that you must go for the bioinformatics if you are uh, considering the biotechnology for the masters. So this is the again uh, US environment. Talk about the US environment. Sorry, sorry, it's already late. Yeah. So it's an just I mentioned about that. Go for the best country, and US gives you the inclusive environment from every country, from every nation. You meet with every nation person, every you, and you also explore each and every dish as well here. So the US is the country of talent and potential. So if you are a talented person, and if you believe, just believe. If you think that you are not a talented, just believe in yourself that you are a talented and you have a potential. Then you must consider, and you should take chance to explore in the US market, because US would provide you a better edge as compared to the Europe. That's it. Uh, is there any question, Hasib, which I left to answer? Almost all the questions are answered. I think we should end it. Yeah, sure. Um, Okay, and if there's an any, announcement. yeah, let's just Okay. ask a question regarding to your. If anyone has a question, just write down the question so I could answer.
I guess no more questions. All are Okay. answered. So just let me tell you guys that I'm also available on the LinkedIn as well. So if anyone among you wants to reach out to me personally and just want to ask anything regarding the career insight, so he or she should easily reach out to me on LinkedIn. My LinkedIn handle is Sajjad Ali, and you can easily find on the Pharmacozyme channel as well. Thank you so very much, sir, for giving us your precious time. There's this announcement for the participants that the certificates will be given to those students who have filled the registration form, and there's no need to fill the attendance form from now. Stay tuned, subscribe to our YouTube channel, and there's an upcoming event MedQ. So please get updates from our channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, sir.